everyone, this is Shikha. Welcome back to my YouTube channel Learning English. In previous video, we have learned about what is present simple tense, or we can say indefinite tense, or what is present continuous tense. In this video, I'm going to focusing on what is present perfect tense and when and where and how we use it. So let's get started. Present perfect tense. The present perfect tense is used in present to indicate the action that has taken place at some specific time. It uses past participle form of the main verb, that is verb plus ed. परफेक्ट वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट. इट मीन्स कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, हो गया है या हुआ है. अगर कार्य जारी है तो कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, और अगर कार्य पूर्ण हो चुका है तो परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यह पता चलता है कि कोई भी एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है और उसे कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स. शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क. वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है. दे हैव बॉट अ न्यू कार. वे नई कार खरीद चुके हैं. So here we can say present perfect tense is used to express action completed in recent past. Present perfect tense में वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है का यूज किया जाता है. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस we use adverbials like just now, yet, already, frequently, often, several times, lately, so far, occasionally, up to now, etc. Now next see uses of present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action that has recently been completed. Present perfect tense का यूज ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है. Look at the example. The train has just arrived. I have prepared breakfast just now. Present perfect tense is also used to express completed action whose time is not given. It means ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनका टाइम नहीं दिया गया है. Examples like we have read all these books. They have left for Delhi. So here we are not sure about the time when we have read all these books and when they have left for Delhi. Present perfect tense is also used to express an action that happened in past but its effect is continuous in present. Means past में अभी घटित हुई ऐसी घटनाएं या कार्य जिनका प्रभाव अभी भी जारी है उनके लिए present perfect tense का यूज किया जाता है. Example, we have already used this brand of tea. He has started a new job. So यहाँ हम कह सकते हैं कार्य का प्रभाव अभी जारी है. Now let's see rules of present perfect tense. First is main verb. Present perfect tense में main verb के रूप में subject के साथ verb की third form जिसे past participle कहा जाता है का यूज किया जाता है. Like come, came, come. So we use come third form of the verb जिसे हम irregular verb भी कहते हैं. Helping verb हैज़ हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है. ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज किया जाता है. एंड आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी हाउ वी मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल्स लाइक ही हैज़ गॉन टू मार्केट, दे हैव वॉन द मैच. फॉर नेगेटिव सेंटेंस वी यूज फॉर्म सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, दे हैव नॉट वॉन द मैच. फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज फॉर्म हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल has he gone to market? Have they won the match? For interrogative negative sentence, we use form has have plus subject plus not plus third form of the verb plus object.
Example like has he not gone to market? Have they not won the match? So now we can say present perfect tense is used to link present and past action. Or the result of the action is important, not the time of the action. I hope you have got the concept of present perfect tense. Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe for more. Keep watching.